चलिए लेट्स स्टडी आवर हार्ट। बहुत छोटा होता है हमारा दिल, सच में बहुत छोटा होता है इंसानों का दिल, काफ़ी छोटा होता है, बिल्कुल आपकी मुट्ठी के इतना बड़ा। जब आप अपने फेस को क्लोज करते हैं उस वक्त जो साइज़ बनती है ना, तो बस उतना ही साइज़ का हमारा दिल भी होता है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। सबको पता है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन situated in thoracic cavity। थोरासिक कैविटी, जी हाँ, वही थोरासिक कैविटी जहाँ पर आपका लंग्स है। थोरासिक कैविटी क्या होता है ये देखो, ये जैसे कि मैं एंगल बना रही हूँ, साइड एंगल बना रही हूँ पर्सन का, जैसे से मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ आ जाए जो मैं बताना चाह रही हूँ। ओके, although this was unnecessary but I actually liked it. So this is a man or a woman, whatever you want, you can assume. Okay, cut open it. तो यहाँ से आपका फुट पाइप जाता है, यहाँ से आपके वेंट पाइप जाती है, एंड हेयर इज़ लंग्स। इतने बेसिक्स तो सबको आते हैं, ठीक है। हेयर इज़ लंग्स एंड हेयर इज़ डायफ्रैगम एंड हेयर इट इज़ आवर हार्ट सिचुएटेड, एंड दिस इज़ हेयर वेयर आवर हार्ट इज़ सिचुएटेड। सो दिस इज़ diaphragm. This diaphragm is this hole from here to like end. This whole cavity is being divided into two parts. The first one is the thoracic cavity. This is thoracic cavity, and this is abdominal cavity. Because this is the region where your stomach, here there is a hole in your diaphragm from where you get your food pipe down, and here is a stomach situated. Now intestine and everything, anus and all, everything, your excretory system, your kidney, all are situated in this cavity, abdominal cavity. And in your thoracic cavity, this diaphragm divides your body into two cavity. First one is thoracic cavity, other one is abdominal cavity, into two parts. And here your lungs and your heart is situated in your thoracic cavity. So muscular organs situated in the thoracic cavity. This is very clear where what is meant by thoracic cavity, where the heart is situated. Okay, made up of cardiac muscles, definitely. Heart is made up of cardiac muscles. Before starting heart, let us first understand some of the basic anatomical terminology. First one, whenever we study anatomy, we assume that we are studying anatomy of a person lying in front of us, facing us. Say this is a person who is lying in front of us. So when I say, since I'm drawing this with my right hand, so when I say for this person facing towards me, this becomes my right and this becomes the left. Yani this is the left of the person. For this person, this is the right of the person. Hence we are studying while studying anatomy, this becomes the left part and this becomes the right part. Clear? चलिए अब इस कार्टून को ऐसे मिटा देते हैं. Bye bye. It's time to go. So, starting with our heart. Everybody gets excited. Da-da-da. Left. Right. Sorry. Actually मेरा स्पेस काफ़ी कम है, तो आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू एडजस्ट विद इन दिस स्पेस. होप आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊँ गिवन स्पेस में. ठीक है, दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट. अब यहाँ ये देखिए, लोअर पार्ट. ओबियसली सबको पता है कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है. हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट. ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स. मैं जैसे जैसे बता रही हूँ, जैसे जैसे आपको ले जा रही हूँ, बस मेरे साथ चलते चलिए. ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स. दिस इज रोटेट हो गया. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट कॉल्ड वेंट्रिकल्स. लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ये राइट हैंड साइड है तो हम इसको बोल देते हैं राइट वेंट्रिकल्स. नो प्रॉब्लम. Around this left ventricle, we have a very thick muscular wall, and this wall thickens when it comes around the right ventricles. Reason है भैया इसका रीज़न ये है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पम्प ब्लड्स in the entire systemic circulation. I use the word systemic circulation. Systemic circulation means right from your ears to your legs. This is your systemic circulation. So since it has to pump the blood in from against the gravity and towards the gravity both, so it needs a very high pumping pressure, which is provided by this thick layers of muscles. This thick muscles around the left ventricles supports left ventricles in providing such pressure so as to pump the blood in your entire systemic circulation. Okay.
यहाँ इस लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से वेसल्स निकलते हैं. फर्स्ट वेसल्स, एक वेसल यहाँ से निकलता है, गार्डेड बाय अ वाल्व. एवरी वेसल्स, जो भी वेसल्स क्या होता है, देखो वेसल से खाली ट्यूब, वेसल हम किसको बोलते हैं, एक पतला खाली ट्यूब को वेसल बोलते हैं. तो एक पतला खाली ट्यूब जैसा वेसल जो है वो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर की तरफ निकलता है. काफ़ी मोटा सा वेसल, मतलब ओबियसली बाकियों वेसल से ज़्यादा मोटा, बट वेसल्स एक्चुअली ये ट्यूब को बोलते हैं. हमारी बॉडी में जो ट्यूब्स होते हैं, जो जिसके अंदर हमारी जो ब्लड है वो रन करते हैं, जिसको हिंदी में धमनियाँ कहते हैं. वेसल्स आर ऑफन कॉल्ड एज धमनियाँ इन हिंदी. ओके, तो ये एक मोटा सा वेसल यहाँ से निकलता है, गार्डेड बाय द वाल्व ओवर हेयर कॉल्ड, यहाँ पर एक वाल्व होता है जो इसको गार्ड करता है. ओके, और इस वेसल को हम बोलते हैं आयोटा. दिस वेसल इज कॉल्ड एज आयोटा. Or this valve is called as aortic valve, and the valve guarding this called as aortic valve. Wait a minute. This valve here called as aortic valve. This valve here called as aortic valve. Now ये लेफ्ट एट्रियम ऊपर एक लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर राइट एट्रियम से सेपरेटेड होता है, और यहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है. दिस वाल्व इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, और बाइकस्पिड मिट्रल वेंट्रिकुलर वाल्व भी इसको बोलते हैं. यहाँ पर आता है नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोलते हैं. ऊपर सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रिया. तो लेफ्ट एट्रिया आता है, तो लेफ्ट एट्रिया में जो है चार वेसल्स और आकर मिलते हैं. ये एक, मैं यहाँ 2 ही ड्रॉ कर पा रही हूँ क्योंकि 2 इसके पीछे होते हैं. ओके, तो ये मतलब 1 2 3 4, ये 4 वेसल्स आकर के लेफ्ट एट्रियम में गिरते हैं. दिस कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम, कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम, जिसमें 4 वेन्स आकर के जिसमें 4 वेसल्स आकर के गिरते हैं. इन वेसल्स को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स. दिस वेसल्स आर कॉल्ड एज pulmonary veins. These vessels are called as pulmonary veins. Now the name itself suggests pulmonary, which means it has something to do with lungs. It has something to do with lungs. आप लोग ये बात याद रखिएगा, नाम है इसका pulmonary vein and it has something to do with lungs. तो ये क्या करता है, and very simple, the vessels which are coming towards the heart we call it veins, and the vessels which are going away from the heart we call as arteries. So this aorta is an artery because it's carrying blood away from the heart in the systemic circulation, and this is called pulmonary veins. Why it is called as pulmonary veins? Because it is carrying blood into the heart, and hence since the direction of the blood in the vessels is towards the heart, it is called as vein. And its name pulmonary itself means it has something to do with lungs. So pulmonary veins carries the blood from lungs towards the heart. Since it is a vein, it will always carry the blood towards the heart. So it's carrying the blood towards the heart, but it is coming from pulma, that is lungs, from your lungs. It is coming from your lungs. Okay, fine. Now let us begin our study of right ventricles. In right ventricles, this is right ventricles. Here a vessel from the right bottom chamber of the heart, a vessel goes out, and soon it divides into 2 parts, and since it carries blood away from the heart, it is definitely an artery. Since it is carrying blood away from the heart, it is an artery, and it gets divided into 2 parts, and each for the right and the left lungs. It is also guarded by a valve. Yes, this valve is arterial, also called a semi-lunar valve because of its shape like moon. It is also called a semi-lunar valve. It's also called a semi-lunar, and the same is the case with this. The same is the case with this valve. This is also called a semi-lunar valve. Called a semi-lunar valve. So this, from right ventricle, there's a large vessel which arises called
pulmonary artery, called pulmonary artery. Its name is pulmonary artery. And just let me write its name. Its name is pulmonary artery. This is pulmonary artery. To draw more this later also, so that's why I am adjusting the space. Yeah, this is good. This one is pulmonary artery. Now artery means always away from the heart. Artery means always away from the heart, and pulmonary means definitely this is going to take blood from right ventricles away from the heart towards the lungs. So that's why it's called as pulmonary artery, guarded by the valve. Here pulmonary valve, guarded by the valve. This pulmonary artery is guarded by the valve, and this valve is called as this is the pulmonary arterial valve, also sometimes called as pulmonary arterial semilunar valve, because obviously of its shape it's like semilunar. Okay, both of these valves, this one, both of this valve, this and this, are described as semilunar valve. Okay. Okay. Here's the valve which separates. Here's the valve that separates the right ventricles to the right atria, and this valve, particularly this valve, is called as tricuspid valve. This valve is called as tricuspid valve because the valve, the left atria, this is left atria, the left atria and the left ventricular valve has two cusps. Now the question is what is cusps? ओके अब हम इसको ना लोग साइड से देख रहे थे, हार्ट को ऐसे काट करके लैटरली काट के देख रहे थे. अब हार्ट को हम लोग ऊपर से काट, मतलब इस वाल्व को, इस सिर्फ इतने पोर्शन को हम लोग ऊपर से देखेंगे. तो अगर इतने पोर्शन को हम ऊपर से देखें ना, तो ये वाल्व में सिर्फ दो कस्प्स हैं. टू कस्प मीन्स इट हैज़ टू ओपनिंग्स ओनली. लाइक two cusps, like when it gets open, it appears like this. I have a very miserable drawing, what can I do? But this valve is tricuspid valve, means it has three cusps like this. Means when this valve will open, there will be three doors towards downward, like एक तो नीचे ऐसे होगा, दूसरा उधर से आएगा, और तीनों खुलेंगे और तभी नीचे आएगा, ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड हो जाएगा. Tricuspid valve. For more, just for knowledge, this, all three are tricuspid valve, but only this is called as tricuspid valve. We call only right atrioventricular valve as this called as tricuspid valve. This one called as tricuspid valve. So the right atrioventricular valve is called the tricuspid valve. And just for interest, aortic semilunar valve and the pulmonary semilunar valve also have three cusps, but this is the only one which we call as tricuspid valve. These two are also tricuspid valve. Now we have to put is the final chamber of the heart, that is right atria. Here is the right atria, and there are two large vessels flowing into the right atria. The vessel coming from the above, draining the
the vessel coming from the above and draining the upper part of the body, called as superior vena cava. I will be using this color. Let's use this color. This is called as superior vena cava, draining the blood above from the body. Superior vena cava. And the vessel draining the blood below from the body, called as inferior vena cava. Vena cava. And both of these are referred to as the vena cava, the great vena cava. And so the vena cava is the largest vein in the body. Vena cava is the largest vein. Let me write it down. Vena cava is the largest vein in the body. Superior vena cava is draining the upper part of your body, and the inferior vena cava is draining the lower part of your body, that is the bottom part of your body. Let me write this also. Superior vena cava is draining the upper half of the body, and the inferior vena cava is draining the lower half of the body. Both draining blood into the right atrium. So what we can actually do now is to describe the flow of the blood from the heart. It will be very interesting. Let's do it. Now, the blood coming back from the lungs is to come back in the pulmonary veins, and this blood is oxygenated. This blood is oxygenated. The blood coming from the lungs. The blood coming from the lungs comes through pulmonary veins, and this blood is oxygenated. And if we do a oxygen saturation test on our blood, we always probably found our oxygen saturation to be 98% to 99%. So actually it varies between 96 to 100%. Say if you are young, you will find your oxygen saturation to be 96% or 98%, and if you take some deep breath, like 2 or 3 deep breath, you will find yourself 100% saturation, oxygen saturation, meaning your lungs are completely saturating your blood. The lungs are capable enough to pass all the the oxygen to the blood which are passing through the lungs. They are able to oxygenate them. So 100% saturation oxygen means that your blood are 100%ly all the bloods which are passing through the lungs gets oxidized. Now these are this is highly oxygenated blood containing oxyhemoglobin, and it is going to return from the lungs in the 4 pulmonary veins, 2 in front and 2 are behind this. I cannot actually draw them because it exists in 3D, into the left atrium. From here, the blood goes to the from mitral valve to the left ventricles. When the left ventricle contracts, see, first the blood is brought by these pulmonary veins from your lungs to this left atrium. The blood fall into this atrium, this chambers, this valve gets opened up. The blood then enters through this mitral valve, which is also called as mitral valve. This valve is called as mitral valve. This valve is called as mitral valve. Mitral valve, or you can also call it as a left atrioventricular valve. It is called as mitral valve. Okay. Now the left ventricle contracts. This left ventricle contracts, and this blood gets pumped into the aorta. This blood gets pumped into the aorta, and from there
and from there to all arteries, and from there, this was aorta, and the blood from there diffuses from here to all arteries, pumping the blood to the systemic circulation of the body. Small arteries diffusing all of the systemic arterial circulation. The blood from left ventricle, from aorta, goes into the all arteries, diffusing into your systemic circulation. And this blood goes down the tissues of your body, the cells of your body, and these cells take some of the oxygen of your blood. Not all oxygen, some of the oxygen, some of it. So when it arrives back from the systemic vein, when this blood from here aorta goes to all part of the body, this is oxygenated blood, and the tissues there use some of the oxygen of the blood, not all oxygen, some of the oxygen of the blood, and then the blood returns from superior vena cava. Then the blood, if returns from superior vena cava, I will use this color or something like this color. Okay, it becomes less oxygenated from upper part of the body and from the lower part of the body. After the usage of tissues, when it returns, it becomes less oxygenated. So superior vena cava, and from the bottom of your body, it comes from the bottom half of your body by the inferior vena cava, and this partly deoxygenated blood. Actually, traditionally in biology, we draw deoxygenated blood with blue color. But since I have used, I can still use blue color, no problem. Let's use blue color for it. I have used green for it. Let's use before. Okay, in biology, traditionally we use blue color to denote the deoxygenated blood, although it does not appear as blue, but since it's tradition, so we are following it. So from there, the blood goes from tricuspid valve into the right ventricle. Now, when the right ventricle contracts, the blood ejected to when the right ventricle contracts, this deoxygenated blood gets pumped from the pulmonary artery towards the lungs. Each of the lungs purify. So we saw that the blood flow from the heart is regulated by these 4 valves, and it goes through the atria to the ventricles, to the body, back to the right atria, right ventricles, and back to the lungs. So in nutshell, now we will summarize this whole anatomy. Okay, we have left ventricles, left atria, right ventricles, right atria. We have 4 pulmonary veins. There are 4 pulmonary veins. We have 4 pulmonary veins. We have aorta. We have 4 valves guarding these 4 openings. This is called as mitral valve. This is called as aortic valve or semilunar valve. This is also called as semilunar valve or pulmonary aortic valve, and this one is called a tricuspid valve. Okay, and the flow of blood is like the oxygenated blood. Always remember, vein is always that vessel which carries blood towards the heart, and artery is always a vessel which carries blood away from the heart. Okay, so pulmonary vein will bring the blood, oxygenated blood, फ्रॉम द लंग्स. अब ब्लड जब वो लंग्स से आ रहा है ना हार्ट के पास, जब ब्लड जब वो लंग्स से हार्ट के पास आया तो लंग्स के पास क्या है, भर भर के ऑक्सीजन है. मैंने सांस लिया, भर भर के ऑक्सीजन है. वो ऑक्सीजन कूद कूद के ब्लड में आ गया और वो ब्लड लेकर के पल्मोनरी वेन हार्ट की तरफ आ रहा है. यहाँ से ब्लड जो है इन वेसल्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में भर जाता है. जैसे ही भर जाता है तो ब्लड के प्रेशर से ये वाल्व खुल जाता है और यहाँ पे हालांकि कुछ मसल्स पे अटैच्ड होते हैं. उसका जैसे ये वाल्व खुलता है ये सारा ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के जमा हो जाता है. लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही जमा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सर्ट्स प्रेशर, पंपिंग प्रेशर, और ये सारा वाल्व जो सारा ब्लड जो है वो आयोटा में चला जाता है. ये आयोटा इस ब्लड को लेकर के हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चले जाते हैं. डिफरेंट वेसल्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है फ्रॉम माई ईयर, ब्रेन टू माई टो.
वहाँ से क्या होता है, सारे टिश्यूज़ क्या होते हैं, काम करते हैं, तो इसके ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और ब्लड का ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपना ब्लड में देते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है टिश्यू लेवल पर, तो इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। अब क्या होता है कि वेना कावा क्या करता है, हमें फिर ये सारा ब्लड जो है, ये सारा ब्लड टिश्यू से हार्ट की तरफ आते हैं, फॉर इनको फिर प्यूरीफाई भी होना, और प्यूरीफाई होने के लिए पंप करना होगा इसको। प्यूरीफाई कहाँ होगा, ब्लड प्यूरीफाई लंग्स के पास होगा, और लंग्स के पास सारे ब्लड को पहुँचने के लिए हमको पंप करके लंग्स के पास पहुँचना पड़ेगा, और इसका फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन है पंप करना, इसीलिए बॉडी का सारा ब्लड पहले हार्ट में आता है, फिर हार्ट उसे पंप करके लंग्स के पास भेजता है। तो ब्लड का सारे बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा अपर बॉडी पोर्शन और इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पोर्शन से लेकर के आता है, और राइट एट्रिया में वो आकर के ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाता है। फिर वहाँ से ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फिर वो सारा का सारा ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, तो आर्टरी उन सारे ब्लड्स को लेकर के कहाँ जाता है, लंग्स के पास चला जाता है, और लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए फिर ऑक्सीजनेट हो जाता है, फिर वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, क्योंकि वेन्स इज ऑलवेज कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो वेन्स के थ्रू आ जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पल्मोनरी वेन इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, pulmonary vein is carrying oxygenated blood and aorta is carrying again oxygenated blood. Okay, superior vena cava is carrying deoxygenated blood, while pulmonary artery is carrying, आर्टरी इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ पर जो आर्टरी है, जो ये इस पोर्शन से आयोटा से जो आर्टरी निकलेगी, वो सारी आर्टरीज के पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो मैक्सिमम आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बिकॉज दे आर पम्प्ड अवे फ्रॉम द हार्ट। बट जो आर्टरी हार्ट से ब्लड लेकर के लंग्स के पास गई है, तो लंग्स के पास अभी जा रहे हैं, अभी लंग्स तक पहुँचे नहीं है, तो लंग्स के पास जाने से पहले ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। इसका मतलब वो वाली आर्टरी विल कैरी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट से दूर जा रही है इसलिए आर्टरी, और क्योंकि अभी तक लंग्स के पास नहीं पहुँची है इसलिए उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लंग्स के पास जा रही है वो पल्मोनरी। सो पल्मोनरी आर्टरी कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं तो उसको छोड़ के बाकी सारे आर्टरीज कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ से जाते हैं। उसी तरीके से वेन्स जो होती हैं सारे, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो ये वेना कावा इज ऑल्सो अ वेन, तो वेन है टुवर्ड्स द हार्ट, जितना वेना कावा जितने भी वेन्स होंगे उसमें क्या होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। बट पल्मोनरी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, क्योंकि वो लंग्स से होकर आ रहा है, जब कोई चीज़ लंग्स से होकर आ रहा है तो वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड है। एंड दिस इज आई कैन से कि हमारा ये ब्लड का कैसे फ्लो होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया है। थैंक यू।